Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stocks hit fresh record highs, rising around 1%. Sensex achieves 55,000 mark. Nifty surges above 16,500 level. Major Asian equity indices logged losses amid concern over spread of COVID-19 Delta variant, and Brent crude prices fall to trade near $71 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, नई ऊंचाई पर पहुंचे प्रमुख सूचकांक। 1% से अधिक बढ़त के साथ सेंसेक्स 55,000 और निफ्टी 16,500 के स्तर से ऊपर उठकर हुए बंद। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट के प्रसार की आशंका से एशियाई शेयर बाजारों में हुई गिरावट, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $71 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। एशियाई शेयर बाजार में कमजोरी के रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों ने अच्छी खासी लिवाली की, और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। सेंसेक्स 55,400 और निफ्टी 16,500 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 593 अंक यानी 1.08% की बढ़त लेकर 55,437 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 165 अंक यानी 1.01% लाभ के साथ 16,529 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कमजोर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। Sensex and Nifty today hit fresh record highs. Both equity indices surged more than 1%, even as the cues from other Asian markets was negative. Sensex closed above 55,400, while the Nifty settled above 16,500 level. BSE Sensex gained 593 points, 1.08% to trade at 55,437 points. NSE Nifty also surged 165 points, 1.01% to trade at 16,529. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.06% and the small-cap index slipped 0.01%, outperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 20 companies gained while 10 fell. TCS was the top gainer as it surged 3.2%, followed by Larsen and Toubro, which gained 2.8%. Bharti Airtel rose 2.2%, HCL Tech climbed 2.1%, and Titan gained 1.8%. On the other hand, Power Grid declined 1.3%, and Dr. Reddy's Laboratories fell 1.2%. IndusInd Bank slipped 1.1%, and Bajaj Finance ended 0.7% down. In sectoral indices, 16 out of 19 sectors logged gains, except Telecom, which gained the most, adding 1.8%, followed by Tech and Capital Goods, as both climbed 1.6%. IT sector stocks appreciated by 1.5%. On the other side, Realty and Healthcare both declined 0.8%, and utilities fell 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative, as shares of 1,536 companies gained, while 1,687 companies fell. Shares of 117 companies remained unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 1 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 25 पैसे के स्तर पर पहुंच गया।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक 0.17% घटकर 92.88 पर आ गया। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। लगातार लिवाली तेज रही और अंतिम क्षणों में भी लिवाली का सिलसिला शुरुआत की तुलना में बेहतर देखा गया। क्या सब प्रमुख कारक रहे आज की तेजी के पीछे? मनोज जी, यदि हम पूरे सप्ताह को देखें तो ये लगातार दूसरा सप्ताह रहा है जब बाजारों में जो हेडलाइन शेयर्स हैं, यानी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं, उसमें हमने तेजी देखी है। और जैसे आपने बताया कि जो निफ्टी और सेंसेक्स, ये जो दो इंडेक्स हैं जो मार्केट की बड़ी कंपनियों की दशा को दर्शाते हैं, ये दोनों रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर, यानी सेंसेक्स 55,000 से ऊपर लेवल पर चला गया और निफ्टी जो है वो 16,500 से ऊपर लेवल पर क्रॉस करा। तो ये एक नई ऊंचाइयां हैं जो मैं कहूंगा मेन शेयर्स के लिए, बड़े शेयर्स के लिए। इनफैक्ट पिछले कई अगर 2-3 महीने की तरफ हम नजर करें तो हम देखेंगे कि उस दौरान जो बड़े शेयर्स थे यानी लार्ज कैप्स थे, वहां पर कुछ शांत था बाजार, वहां गिरावट नहीं थी लेकिन वो बहुत बढ़ भी नहीं रहे थे और इंडेक्स बहुत एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। और जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स यानी मंझोली और जो छोटी कंपनियां थी, वहां पर हम काफी तेजी देख रहे थे। पिछले 2-3 सप्ताह में ये ट्रेंड बदला है और हमने देखा है कि जो स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं वहां पर थोड़े शेयर्स नीचे भी आए हैं और जो लार्ज कैप्स हैं वहां पर हम बढ़त देख रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में एफआईआई के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा और म्यूचुअल फंड के द्वारा थोड़ी बाइंग कम थी और पिछले 2 सप्ताह में हमने देखा है कि ये म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ी है। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रुख है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल यदि हम देखें तो ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे एशियाई बाजारों में भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन है और जितने भी बड़े इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन सब में से भारत के जो इंडेक्स हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे चले हैं। ये मुझे लगता है कि ये एक संदेश है, ये एक मैसेज है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स को बहुत भरोसा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डेफिनेटली पैसा डाल रहे हैं। मुझे लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो इंडियन इकोनॉमी को अब अलग देखते हैं दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी से। Puneet, as we discuss on money matters, that in the market we are seeing the participation of retail investors and of course mutual funds. The data points for July indicate that they are heavily invested in the market. They're net buyers of over 22,000 crore rupees. What is a portfolio that the retail investor is following right now, and how difficult is it to judge that where there are calls that, the market could be overbought? It's a situation that is temporary, but it's still overbought situation. What is your view on that? So Arjun, you're right. I mean, for retail investors to participate in the market becomes more difficult as the markets go higher because the risk element also goes higher. Now, retail investors can participate in 2 ways. One is they can go to the mutual funds and through the mutual fund route, or they can invest directly through mid caps and small caps mostly. What we have seen is in the last 1.5 years, retail investors have directly gone to the markets and invested, and they have made good money. So it's nothing to, we can't fault them because they obviously have multiplied the money in last 1 year and they feel confident that they can probably invest. But as we all know, markets are fraught with risk and they go down. In fact, I must tell you that, and very few people realize this, that already more than 25% of companies which comprise the mid-cap 100 and small-cap 100 indices, more than 25% companies are already down by more than 20% in last couple of weeks. So small caps and mid caps are very, they're volatile. They go up and go down very sharply. Therefore, it is always advisable that small investors, they should be cautious. They should be invested for longer term. They should not try and make quick money. It's very tempting to make short-term gains. And it's very attractive, but it doesn't happen very often. They incur losses. So my suggestion is that wealth creation is always long-term. It may be very exciting to trade and make short-term gains, but real money will be made the longer term. They can invest through mutual funds. They can also invest directly where they are confident about companies. But it needs a lot of expertise. You need to devote time to it. And I would say they should be cautious while investing their hard-earned money in this market. There are mid-cap stocks which have hit their upper circuit in terms of pricing. Is a buying interest from mutual funds, and
Why is it that they're buying so heavily into the market, which is already overbought? How do they make a capital gain and give a return to the unit holders of these mutual fund schemes if they're buying at these levels? So, Arjun, mostly mutual fund managers are supposed to be an informed, learned lot. They should be able to identify long-term winners. So, yes, in mid-caps and small caps, whenever there is buying by large funds, usually stocks rise up a lot because there is less liquidity. There's no supply in these stocks, and they tend to move up very, very sharply. Having said that, of course, we have seen pullbacks in mid-caps and small caps, but on a longer-term basis, the companies should be able to give good, steady returns to investors. Of course, whenever an investor is investing, they should spread the risk across large caps, mid caps, and small caps. And that is how mutual funds are supposed to diversify their portfolio. So I think in these times, to summarize this complex situation, investors should diversify their portfolio. They should put significant amount of money in large caps, which are relatively safer, and some amount of money they should put in mid caps and small caps because they tend to give higher returns. So diversification, I think, is the need of hour, and that is what fund managers also do. पुनीत जी, यदि हम बाजार को देखें तो अपने सर्वोच्च स्तर पर है। जो हमारी आर्थिक कह लें पैरामीटर्स हैं, हम उन्हें ध्यान में रखते हुए यहां से आगे की ओर रफ्तार पकड़ता हुआ संकल्पना करेंगे या एक करेक्शन या एक दो करेक्शन की ओर आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बीते कुछ मतलब कह लें कि समय में हमने देखा है कि 52,000 के आसपास 52-53 और फिर से 50-51 के बीच में सेंसेक्स लंबे समय तक झूलता रहा और अब 55 की ऊंचाई पर है। तो जो कोविड को लेकर आशंकाएं रही हैं पीछे और अब जो आसार दिख रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए अब हम 60 की ओर बढ़ेंगे या एक बार फिर से पीछे आने के आसार हैं? मनोज जी, ये काफी मुश्किल सवाल है क्योंकि बाजार में शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई कारण हैं जिससे बाजार इमीडिएट ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये सोचते हुए कि कल बाजार क्या होगा, हमें निवेश नहीं करना चाहिए। हमें निवेश करना चाहिए ये सोचते हुए कि बाजार आने वाले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में क्या होगा और किस प्रकार की कंपनियों में प्रॉफिट्स जो है बढ़ेंगे। तो यदि हम इसको ध्यान में रखते हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है वो डेफिनेटली वो एक एडवाइजेबल है, क्योंकि आप ऊंचाइयों पर, जब बाजार ऊंचे स्तर पर होते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वही एक तरीका है जो रेगुलर वेल्थ क्रिएट कर सकता है। हैविंग सेड दिस, मुझे लगता है कि बाजार में इस समय वॉलेटिलिटी काफी हो सकती है। देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो बाजार बहुत ऊंची वैल्यूएशंस पर है, तो ये कहना कि यहाँ से बाजारों में कोई बहुत बड़ी तेजी आ सकती है वो मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है बाजार यहाँ कंसोलिडेशन कर सकते हैं +-5-10%, और उसके बाद जब कंपनियां शायद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब हम रिजल्ट्स देखेंगे कि वो इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी और कोविड का डर जो है वो थोड़ा कम होगा, तो शायद जो रीओपनिंग ट्रेड या रीफ्लेशन ट्रेड जैसे कहा जा रहा है वो हो सकता है। पर मुझे लगता है कि अभी बाजार कंसोलिडेशन के मोड में रहेंगे और ये एडवाइजेबल है कि जो इन्वेस्टर है वो भी कॉशियस रहें, वो अपनी जेब को देखकर इन्वेस्ट करें। और देखिए, ग्रीड यहाँ पर बहुत एक वो है मार्केट में, ऐसा लगता है कि जल्दी से पैसा हम कमा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि इससे बचकर रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को एट दीज लेवल्स। जी पुनीत जी, आपने 2 बातें यानी कही हैं, एक वेल्थ क्रिएशन में टाइम लगता है और दूसरा लोभ। इन दोनों, इससे बच के रहना चाहिए। हम 2 वर्ष का यदि समय लेकर चलें तो पीछे के अनुभव को देखते हुए अगले 2 वर्षों में कौन से सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो सुरक्षित दिख सकते हैं और जहां निवेश जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसे ध्यान में रखते हुए वहां जो हमारे निवेशक हैं, जो सिप के जरिए या कह लें म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में जा रहे हैं, या जो कह लें हमारे आम श्रोता हैं, वह किस सेक्टर को माने कि वो अच्छा यानी उनका धन लौटेगा अगले 2 वर्षों में? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में जो इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि अब क्या होगा जैसे ही ये कोविड से रीओपनिंग होगी और दोबारा से एक लोग वापस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरे जोर शोर से रीएक्टिवेट करेंगे,
तो जो इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहां पर हम काफी खपत भी देख सकते हैं, वहां पर स्पेंडिंग भी देख सकते हैं, और ऐसा हम यूरोप में देख भी रहे हैं। यूरोप में भी जो इंडेक्सेस हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं, क्योंकि वहाँ कंजम्पशन या रीओपनिंग ट्रेड जो है वो बहुत फास्ट है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल गुड सेक्टर है, बैंकिंग क्षेत्र है, ट्रैवल ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर ज्यादा बेनिफिट, या एविएशन है, यहाँ पर ज्यादा फायदा होगा। मुझे देखिए सभी सेक्टर्स को फायदा होगा, सभी सेक्टर्स में आगे बढ़त होगी, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो पिछड़ गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। तो यदि ये इकोनॉमी रीओपन होती है और वापस एक्सपेंशन होता है, तो इन सेक्टर्स को जो पिछड़ गए हैं उनमें हम ज्यादा बेनिफिट से ज्यादा गेन देख सकते हैं। We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about the stock market performance with our expert Puneet Jain. Puneet, once again a warm welcome to your Market Mantra. We were discussing about the markets reaching an all-time high, crossing 55,000. It's 55,487.79, the all-time high. Puneet, tell me, hedge funds have access to discounted money loans from the Federal Reserve, which is why there are talks about when it would be tapered off, so that the Western stock market indices, which have also hit all-time highs, because the companies are investing in securities instead of in their companies itself. Are we seeing some of that fund flow into mutual funds also into our markets? So Arjun, yes, you're right. I mean, hedge funds by definition are very risky instruments, and they borrow a lot. So most of their trades are leveraged, and whenever interest rates are low, hedge funds tend to make very risky bets because they have cheap money available. So, and in 2013, when the US Fed had first time talked about this tapering the asset purchases, we saw a very sharp fall in the market. So this time around, I find that the US Fed is very cautious. They are trying to guide the markets through this so-called taper tantrums kind of situation, and hopefully the Fed will slow down their the tapering in such a manner that it will not disrupt the markets. Having said that, hedge funds right now are, of course, they're investing in commodities, they're investing in stocks, they're investing in bonds. Pretty much every asset class, they're quite leveraged and they're invested. And going forward, if interest rates rise, which we expect to start happening sometime next year, then definitely we will see them sell off. We'll see some pullback in the markets. And so all of us are really sitting, on our toes in a sense, waiting for that to happen. Whether it will happen in 6 months or 1 year, we don't know. My own estimate is that sometime early next year, at the end of first quarter maybe, or during the first quarter, we will see that thing happening. And therefore, like I said earlier, investors should always be cautious. They should be prepared, and they should not be taking very large risks. Hedge funds, of course, do it, and we all know that they play the markets with leveraged money. But the risk is that if interest rates rise, they will be under pressure, for sure. Just finally, with the volatility index at 13, it went up by 5% today. Was there short selling, and is short selling a major risk to pull down prices so that the hedge funds or the FIIs and the DIIs, including mutual funds, can take advantage through short covering, buying it back at lower levels? So, Arjun, all kinds of institutions, they undertake these activities. And in fact, short sellers, there were a lot of short sellers a couple of weeks back in the market, and a lot of them got burned. So it's not as if the short sellers always win, and they were not anticipating such a sharp rise in the markets. I think a lot of short covering has happened actually in the last couple of weeks. So yes, we find short sellers, they're sold in the futures market, expecting the prices will come down and they'll cover it. But I think right now the markets are so liquid, and the domestic fund flows is so large
that usually the people used to manipulate the markets by short selling, etc. Right now, I don't think they are effective. And investors right now, I think they seem to have upper hand. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां मुख्य रूप से गिरावट हुई। कोविड डेल्टा वेरिएंट के प्रसार से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए निवेशकों ने आज बिकवाली की। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% घाटे में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग दोनों में 0.5% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% नीचे आ गया। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.4% और फ्रांस का CAC 40 0.3% ऊपर चल रहे थे। Moving on to the U.S. stock market, the three major U.S. stock indices gained marginally while U.S. Treasury yields and the dollar firmed yesterday amid debate over when the Fed Reserve will start to ease its monetary policy. Investors believe the possibility of near-term tapering was receding after the report of a fall in the inflation for the month of July. U.S. stocks added but remained range-bound as investors weighed data showing a steady jobs market recovery against a rise in producer prices ahead of earnings reports from major companies. The Dow Jones Industrial Average added but ended almost flat. The S&P 500 gained 0.3% and the Nasdaq Composite Index climbed 0.4%. Puneet, just to avoid confusion, why is tapering being linked to inflation, that the cost of money, the rate of interest would be go up in order to adjust against inflation, whereas the discounted rate at which money is being borrowed has been used to buy back securities of the company itself by the borrower instead of investing in the operations of the company. So why are they looking at macroeconomic data for reflecting corporate performance? And we're seeing the Dow, S&P, Nasdaq continuously gain over time because the promoters, the management of the company have been buying back shares and raising prices. So what is the thinking here? So Arjun, in classical economics, whenever money is cheap, if the interest rates are low, that is, then the borrowers can easily borrow that money at low interest rates and then use it to buy assets. So they buy commodities and that is supposed to increase consumption and therefore help the economy grow. However, when this consumption goes beyond a point and the supplies become less and consumption becomes more, inflation begins to rise and commodities or goods become so expensive that actually the consumption starts falling because of high inflation and high prices. So while in the initial phase inflation helps economy grow to some extent by pushing demand and by pushing more borrowings and more consumption, when inflation goes out of control or goes very high, then it starts affecting consumption negatively. So while the US has played out the first part, which is basically making money so cheap that economies, they have been trending higher, there's more employment now, there is after COVID, and that was the way to fight COVID-led slowdown. But the truth is that there are fears that now inflation may get out of control or may get out of hand, and then the US Fed will have to actually bring down the consumption or this excess growth by increasing interest rates. And that is how the economy works. Now, whenever money gets more expensive, as you can see, then people will start pulling money out of assets. They'll start selling assets and take the money out and return that money to banks. So clearly, interest rates have a very significant impact on asset prices. So fortunately in USA, the latest inflation reading we got is quite low and manageable, and therefore there are now hopes that the US Fed will not raise rates in a hurry, and they will let this easy money continue for some more time without stoking inflation further. However, if inflation rises, then I think it will become imperative for the US Fed and the Reserve Bank of India also to raise rates. But again, we feel that may not happen at least for another 6 to 9 months maybe. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है।
उन्होंने कहा कि नई वाहन स्क्रैपिंग नीति से हमारे वाहन उद्योग को नई पहचान और नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों रोजगार भी उपलब्ध होंगे। सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति आरंभ करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि नई नीति से जीएसटी संग्रह में 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य इस नीति के माध्यम से भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में वाहन स्क्रैपिंग का मुख्य केंद्र बनाना है। संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी हम समझना चाहेंगे, किस रूप में यह नीति एक ओर जीएसटी बढ़ाने में सहायक होगी, दूसरी ओर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश भी जुटाया जा सकेगा, इसके लागू होने पर रोजगार भी उपलब्ध होंगे। देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है। एक तो लोग समझते हैं कि स्क्रैपिंग यानी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हम जब स्क्रैप करते हैं तो एक तो नई गाड़ियों की डिमांड जो है वो बढ़ती है, नई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है, तो वहां हमको मैन्युफैक्चरिंग में काफी फायदा होगा। और साथ में ही जो बात कही है मंत्री जी ने कि ये एक इंडिया जो है वो स्क्रैपिंग का एक सेंटर बन सकता है और बहुत बड़ी डिमांड है जो पुरानी व्हीकल्स के स्क्रैपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। भारत के पास जगह भी है, तकनीक भी है और मैन पावर भी है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा काफी क्षेत्रों को होगा और डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी होगा और जो बेसिक मटेरियल सेक्टर है उसको भी होगा और एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली इसमें काफी बढ़ती है। Let's have a look at the oil market now. Oil prices today fell for a second day after the International Energy Agency warned that demand growth for crude and its products had slowed sharply as surging COVID-19 cases worldwide forced governments to revive movement restrictions. In intraday trade, Brent crude was trading around $71.20 per barrel. WTI crude prices were at $68.90 per barrel. Puneet, we have discussed about, the price of crude, whether it's range bound or not. We have examined the futures market. But what about inflation, their role in global inflation and domestic inflation for that matter, especially with economies looking to earn a premium by retailing this fuel when it's through its markets? So, Arjun, we know that high oil prices have been one of the reasons for high inflation around the world because energy prices feed into all commodities, all products. Hopefully now at least OPEC is raising output and therefore the prices will come down and inflation will come down. But oil is extremely important in determining how the inflation trends. And if oil prices come down, I'm sure inflation globally will also trend lower. आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की चमक आज तेज रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 215 रुपए बढ़ा 46,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी 590 रुपए उछलकर 62,450 रुपए प्रति किलो हो गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़कर $1,760.40 प्रति औंस हो गया। चांदी $23.40 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks hit fresh record highs, rising around 1%. Sensex achieves 55,000 mark. Nifty surges above 16,500 level. Major Asian equity indices logged losses amid concerns over spread of COVID-19 Delta variant. And Brent crude prices fall to trade near $71 per barrel. And that's it in this edition of Market Master for now. Goodbye. Market Master.